HT Smartcast. You are listening to an HT Smartcast original. एक मिनट रुक जाओ, रेडी होने दो. चलो ये कर लेते हैं. This could be a great intro. Hi, I'm Akshay. Hi, this is Saurabh, and you are listening to the Founder Thesis podcast. We meet some of the most celebrated startup founders in the country. And we want to learn how to build a unicorn. Are you the type of person who loves going on road trips? After all, there's nothing better than the open roads, your favorite music on the radio, and the thrill of seeing places you have never seen before. But like everything else that is good, it comes with its own set of problems. And for a woman, the biggest one is simply where to pee. Today, Akshadat is speaking to Vikas Bagaria, the man who is on a mission to improve women's access to hygiene and sanitation in the country. Vikas is the founder of PSafe, the market leader in the feminine hygiene sector with a valuation in millions of dollars and the best SMB brand of the year according to Amazon. Here's their fascinating conversation. Hi, this is Vikas Bagaria. I'm the founder of PSafe, your personal hygiene expert. So, Vikas, let's start from your childhood. आप कलकत्ता में आपका बचपन पूरा वहीं पे रहा. So, how was that like? What kind of family did you grow up in? What were you as a child? A great memory for me from Calcutta. So I grew up in a middle class family. We are a family of entrepreneurs. My grandfather, my great grandfather, my father. So we actually belong from Haryana. Previously, it was Rajasthan. My dad started. उन्होंने अपना खुद का business start किया. क्योंकि I think India में he was one of the first जिन्होंने warehousing equipment, forklifts और वो सब import किए थे. हम कलकत्ता में I remember after when I was 6 years old, we moved into a condominium in way like in 78, 79. So I grew up in a condominium. एक बिल्डिंग थी जिसमें 50 लोग रहते थे और वो कम्युनिटी फीलिंग ऑलवेज से रही है एंड स्कूलिंग कॉलेज सब वहीं पर हुआ. So, when you were like during your school days, what did you think you would do when you grew up? Like, what was the plan at that time? मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता था and I was very good in sports. I even played under 19 for Bengal in cricket. I was a right arm fast bowler and और हमेशा मैं एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था. But I think 95 में मेरे पाँव में चोट लगी थी जिसके कारण I have to be on crutches. मैं बैसाखी के सहारे 2 साल बिताया था and then everything, all my dream of becoming a sportsman got shattered. और काफी क्रिकेट खेला हूँ मैं सौरभ गांगुली हमारे कैप्टन हुआ करते थे जेवीएस कॉलेज में जब मैं था. He was अच्छा, wow. 2 years senior to me. मैं उनके टीम में खेला हुआ हूँ. बहुत अच्छा लगता था उनको बॉलिंग करना. अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जब मैं कोलकाता गया था तो I went and met him also. So best part was कि coming from a business family, people are doing different things and I wanted to do a career in my sports. But बहुत सारी ऐसी हालात हुई कि मुझे first year में ही in my college I have to join my father's business while doing my studies. So then what happened? I can tell you one more thing that St. Xavier's में पढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा ये था कि आप 9:40 को फ्री हो जाते हो. Because the college starts at 6 and used to get over by 9:40. That is why maximum people used to go and enroll themselves into chartered accountancy. And मेरे साथ भी वही हुआ कि मैं CA में enroll किया था फर्स्ट ईयर में ही. जब फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ था CA का तो we were the first batch. और मैं शायद 8 या 9वें महीने में मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था. I didn't want to continue. So I wanted to do something different. So that was the main reason I dropped out of CA after giving one exam. Then मैंने कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट मेरा होने लगा बिकॉज इंटरनेट उस समय आया नहीं था 93 में. So I used to go and do some kind of coding, some DBase or Fox Pro और ये सब आ गए थे. And so 9-10 o'clock I used to go to my office, my dad's office. एक बताता हूँ उससे पहले कि अगर आपको बताऊँ कि just after my class 12
I wanted to go to US and I wanted to study there for my PBA, Bachelor's in Business Administration. So हुआ यूं था कि क्रिकेट ऑफ कोर्स मुझे हमेशा इंटरेस्ट करता था, बट मेरे अगल बगल में जितने फ्रेंड्स थे वो सब कोशिश कर रहे थे कि वो बाहर जाके पढ़े और कुछ MBA करके आए. तो मैंने भी चाहा चलो चलो एग्जाम देते हैं या फिर अप्लाई करते हैं. मैंने अप्लाई किया और आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू गेट इनटू UC बर्कली कैलिफोर्निया एंड मुझे एडमिशन भी मिल गया. कुछ परसेंटेज ऑफ आई थिंक 20-25% को स्कॉलरशिप भी था बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स. आई यूज्ड टू प्ले द ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो कोर्स करने नहीं गया और यहाँ पर फिर सेंट जेवियर्स में एडमिशन ले लिया. रीजन ये था कि उस साल मेरे पिताजी को कुछ तबीयत खराब हो गई थी उनकी, and he has to stay in home for good 6 to 8 months. And that time my mom used to go to office to take care of in his absence because he was bedridden. And I think that made me realize that I should not go out and I should help my dad. And that's the reason I started going to office. So बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग थी, जैसे एक यंगस्टर्स में होती है, एक 18-19 साल के लड़के में होती है कि वो हर चीज करना चाहता है. तो मेरे साथ भी वही था. पहले मैं US जाना चाहता था, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, मैं बिजनेस करना चाहता था, तो बहुत कुछ थी. बट कभी भी वो दिमाग में नहीं आया कि मैं एक प्रोफेशनल बनूं और कुछ करूं, एक नौकरी करूं, क्योंकि वो कभी भी मेरे आसपास में कभी था नहीं. कोई भी था, जो भी थे हमारे आसपास में कुछ ना कुछ छोटे छोटे बिजनेस ही कर रहे थे, चाहे वो कुछ भी काम करे. तो इस टाइम पे आपकी सिस्टर ने भी अपना काम मतलब खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, आई बिलीव. एग्जैक्टली, बहुत पहले ही था. मैं उस समय 14 ईयर्स था, आई थिंक मैं क्लास 7-8 में था. तो यू ऑलरेडी हैड दैट entrepreneurship का role model in front of you when you were in college. So then what happened once you passed out of Xavier's? So within Xavier's बहुत कुछ सीखने को मिला because मैं ऑफिस जाने लग गया था और पापा वापस आ चुके थे, and I think that really helped me. वो 6 महीने की गैप के बाद he started joining and he was surprised that I learned so much. So शुरू में मैं so during that time कॉलेज के टाइम में मुझे याद है कि मैंने हाफ ऑफ इंडिया कवर कर लिया था एज अ सेल्समैन. उन्होंने मुझे क्या करवाया, सबसे पहले कि जाओ जाके पैकिंग डिपार्टमेंट में काम करो, कैसे पैक होता है सामान. फिर उन्होंने मुझे भेजा कि ये सामान जब कोरियर ट्रांसपोर्ट में जाता है, उसमें तो कोरियर होते नहीं थे इतने, कि ट्रांसपोर्ट में जाते हो तो कैसे डिलीवरी करते हो वो देखो. और जो कस्टमर होते थे ना वो बहुत ही ऑड जगह में होते थे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट कलकत्ता, देन जस्ट इमेजिन बिहार के माइंस के में. सो दैट टाइम हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स HEMMs में मेरे फादर सामान और स्पेयर पार्ट्स और मशीन सप्लाई करते थे. तो कोल माइंस हो गए, बॉक्साइट माइंस हो गए, एकदम दूर दराज एरियो में हमें जाना पड़ता था, यहाँ कुछ नहीं मिलता था. सो मैंने अपनी जो फर्स्ट जो सेल्स वाली चीजें वहीं चालू करती थी, जाता था वहां पर, उनसे मिलता था कि उनको मशीन चल रही है, हमारी जो मशीन है उनको देखता था. तो वो एक बहुत ही मतलब कि जो बेस जो बना था वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना था कि आज कहीं गया, कोई ऑफिसर से मिलना है और 6-6 घंटे बैठा रहता था, फिर भी वो ऑफिसर नहीं मिलता था. वापस शाम की ट्रेन खोल के वापस कोलकाता आ जाता था मैं. तो मैं बहुत ट्रैवल किया उस फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के बीच में. आई थिंक वो अभी तक वो मेरे को काम आ रहा है कि मैंने इतनी आई थिंक आई डिड दैट एंड आई वाज ब्लेस्ड टू डू दैट. सो दैट टाइम एक अपॉर्चुनिटी आई थी. पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड करके पंजाब में कंपनी जो स्वराज ट्रैक्टर्स बनाते थे, दे वर स्टार्टिंग देयर फोर्कलिफ्ट डिविजन in collaboration with a brand called Komatsu from Japan, and they were looking for some distributors for Eastern India. I applied that, and surprisingly, I was selected to make a presentation in front of Punjab Tractors Managing Director. I still remember him, Yash Mahajan. So you were still in Xavier's that time? Exactly. अच्छा, okay. तो मैंने अप्लाई किया बिकॉज 2 साल से मैं काम कर ही रहा था, पापा के साथ में सब कुछ था, मुझे पता था. तो मैंने अप्लाई किया एंड इंडिया से काफी लोगों ने अप्लाई किया था, मैंने भी अप्लाई किया था कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए बिकॉज हमारी बैकग्राउंड थी फोकलिफ्ट्स में, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स में, बिकॉज ऑफ माय फादर. I was surprised. I was told to make a presentation to him, but they said come with the entire market study कि इंडिया में मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कैसे रहेगा, वेयर हाउसिंग कैसे आएगी, और पूरा मार्केट स्टडी जो आज हम डिप डाइव करते हैं, तो वो उस समय पूरा मैनुअल हुआ करता था. और
दो चार अपने फ्रेंड्स। उस टाइम पे इंटरनेट भी नहीं था जहाँ सर्च करके डेटा मिल जाए। एब्सोल्युटली इंटरनेट आया था, और ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ कि 15 अगस्त 1995 में इंडिया में इंटरनेट आया था। कलकत्ता वाज द फर्स्ट सिटी टू हैव इंटरनेट। एंड उस समय दो अकाउंट हुआ करते थे, एक स्टूडेंट अकाउंट और एक TCP/IP अकाउंट। शेल अकाउंट और TCP/IP अकाउंट, जिसमें मॉडेम होता था, वो हैंडशेक करते थे, वो बसता था 14.4 kbps की स्पीड में। तो मैं आई थिंक मेरा नंबर शायद 14 या 15वां नंबर था कि मैंने एप्लीकेशन देके वो इंटरनेट कनेक्शन लिया था। बट उससे पहले मैंने ये रिपोर्ट बनाई थी, जाके लोगों से मिलना, उनसे मैनुअल चीज पढ़ना कि कितने फोकलिफ्ट है आपके पास, आप कब खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो। तो जैसे मार्ग और जिस तरह की एजेंसी होती थी, उसी तरह से मैंने काम किया और एक पूरी रिपोर्ट बना के प्रेजेंट किया। एंड आई थिंक मिस्टर यश महाजन वाज सो इम्प्रेस्ड दैट ही टोल्ड मी, व्हाई डोंट यू जॉइन पंजाब ट्रैक्टर्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर। उन्होंने मुझे वो ऑफर किया था, बोला नो, बट आई नेवर हैड दैट माइंडसेट ऑफ वर्किंग फॉर समवन. I said, I'll be happy if you can make me your distributor and I can do the best. So I think that was one of my first success professionally. The third year of my college, I got a Punjab Tractors distributorship for marketing and sales and marketing of forklifts and other products for Eastern India. एंड नाउ एक क्या होता है, एक उस उम्र में अगर आपको एक थोड़ा बिजनेस का सक्सेस आपको आ जाए, तो आप सोचते हो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। तो मेरे में ही वो कीड़ा था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। आफ्टर आई पास्ड आउट फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, फोकलुक्स की बिजनेस चल रही थी, और क्या हुआ था कि डैड का बिजनेस पूरा एकदम सेट था। तो मैं रियलाइज किया नाउ, बिकॉज वो कीड़ा घुस गया था कि आई कैन डू मेनी स्टफ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये रियलाइज नहीं किया कि फेलियर भी आएगी, कुछ आएगी, बट तो मैंने अपने पापा के अगेंस्ट में अपनी कंपनी बनाई, नई कंपनी, वी आर फोकलिफ्ट, इन 1997। मुझे अभी भी याद है, इट वाज इन मे, जस्ट आफ्टर आई केम आउट फ्रॉम द कॉलेज। और मेरा एक फ्रेंड था ऋषि, both of us were the directors, but वो within 1 year कोई कंपनी हमें चालू नहीं कर पाई थी कलकत्ता में। 1998 दिसंबर तक हमें चालू नहीं कर पाई थी, and he wanted to pursue something else, wanted to pursue his MBA, so he went out, and so वो कंपनी मेरे पास ही रह गई थी। Meanwhile, I got married. 97 December में I got married, and my wife replaced him as the director in the company. एक अपॉर्चुनिटी आई हमारे पास कि दिल्ली में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कार्गो टर्मिनल है, वहाँ पर कुछ मशीन्स को हायर पर देना है, भाड़े पर देना है, और उनको मेंटेन करना है। So it was a big project at that point of time. Some 2 to 2.5 crores of investment was required to get the machine and to give those equipment for rentals in there. Somehow I again made a presentation, मैंने सब कुछ बनाया और बैंक के पास गया और बैंक में अप्लाई किया for getting those machines on lease. Again, I think I was blessed. I got the loans to buy those equipments and to give it to the airport authority. एक साथ मैं दिल्ली आ चुका था, Srina was in Calcutta. I thought I set up everything and then I bought her as well. So from 99 we will start living in Delhi in Ashok Vihar, a rental house there, and we were building it as a newlywed couple and try to build a life. I think that's a great moment when me and Srina, we both got into the business together. But within 6 months, the world was upside down for me. Good for India that the airport authority was getting privatized. GMR came in and they took over the airport authority, the Delhi airport, and all the contract was renegotiated, and so I was told to leave because they didn't find my contract affordable or at a good price. And you can imagine a 23, 24-year-old boy with a loan of 2 crores of against machine, and he has to just go out. But I think मैंने एक चीज जिंदगी में सीखी थी और अभी तक मैं करता हूँ कि कभी भी हार मत मानो, नंबर 1। नंबर 2, पूछो जरा, मतलब कि जाके उनसे एक बार रिक्वेस्ट तो कर लो, क्या पता वो हाँ हो जाए। ना तो always hey, there is always a no. What if there is a yes, right? So I went there and I asked, boss, this is my machine. You will be definitely going and giving the contract to someone else or bigger, because they wanted to give to a bigger company, right? More bigger, more professional companies.
So I said, I have this machine. So you can really, if you want to buy, or if that person want to buy, I can sell it off at a good price. It's fairly good machine. And I think that gentleman was very kind enough within the purview of all the laws and regulations. He actually helped me out in uh, transferring the machine to other company who actually successfully bid it for the operation, and I managed to return the money to the bank. Of course, there were the losses, but that was not that substantial. But I learned, and I said, कुछ भी हो जाए, मैं तो अब कुछ करके ही रहूंगा दिल्ली में. That is how I stayed back, and the entire credit goes to Srijana, my wife, who took care of me, and we started building our life together once again from that point of time. So 2000, let's come back there. So you lost that contract. Then what happened after that? So I stayed back and I started going and visiting the industries in and around Delhi NCR. So Maruti, Hero Honda, Central Color. So these are the few companies. Some like Coke, Pepsi, bottling plant. So I started traveling and I started and that. So I had a great knowledge of forklifts, warehousing equipment, spare parts, and so my knowledge and I think my business acumenship as well as जो मैं सीखा था कॉलेज में रहते हुए ऑफिस जाके और उस समय जब मैं कलकत्ता के आसपास में जब हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज को बेचने जाता था या स्पेयर पार्ट्स या सर्विसिंग करने जाता था आई थिंक that really helped me in going and visiting these companies and offering my services of spare parts. Then after that, I think to 2001, 2 May, 9/11, then dot-com burst that happened, and forklift business चालू हो गया यहाँ पर. I made around 150 customers छोटे से supply कर रहा था. I used to do a good business of close to 80-90 lakh rupees a year. And that's a fairly good business if you do 90 lakh rupees of business in that point of time annually. Without any loan. But फिर वो कीड़ा जागा यार, इससे कुछ मजा नहीं हो रहा. We need to do something. So I started looking at what is happening in the world in terms of material handling equipment. क्या टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है. तो मैंने पढ़ा कहीं पर कि यूएस में कोई कंपनी है जो कि फोर्कलिफ्ट के जो ड्राइवर्स होते हैं ना उनकी आईडी सिस्टम बनाते हैं. तो वो मुझे बहुत फैसिनेट किया वो चीज. मैं बोला ये तो इंडिया में कहीं भी नहीं है, इसको लेके आते हैं बिकॉज वेयर हाउसिंग बढ़ेगा इंडिया में. इंडिया विल बी the fastest growing economy will become one day, and a lot of things will change in India. तो कैसे करके मैंने कांटेक्ट किया. Then यूएस में कंपनी थी. Again, I remember my those days when I made a presentation to Yash Mahajan and got the distributorship. तो मैंने उनको उसी तरह से अप्लाई किया बना के कि बस मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए आपके प्रोडक्ट का इंडिया में. तो वो बोले यार तुम्हारा तो मार्केट ही नहीं है. तो मैंने उनको दिखाया कि नहीं मार्केट नहीं है बट ये ग्रो करेगा एंड आई एम यंग एंड आई कैन डू एनीथिंग. देन मैंने उनको अपना एयरपोर्ट का भी कॉन्टैक्ट दिखाया कि आई हैव एन एबिलिटी टू क्रैक गुड डील्स एट अ गुड at a very fast rate. So they were impressed and they said, can you come for a training? But you have to come to Australia. It will be a 1-month training. We'll be training you with all the other partners, and you have to pay and bear all costs. We just give you free training, and then if you come back and if you realize, then we can think of appointing you as a distributor. काफी पैसे चाहिए थे जाने के लिए. सेविंग्स तो थी नहीं. श्रीना ने जो भी जो घर में हम लोग सेविंग्स करते थे वो था. मैंने अपने डैड से, अपने सिस्टर से, अपने ब्रदर इन लॉ से, मतलब मेरे जीआई से सबसे थोड़े पैसे लिए. और फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई फ्लू, नॉट फ्लू बट आई वेंट आउट ऑफ कंट्री. वहां पर 1 महीना में मैंने ट्रेनिंग ली, समझा, देखा कि वर्ल्ड कहीं और ही एक लेवल पर है. आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट 2001. तो 2002 फरवरी की बात है ये, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था ट्रेनिंग के लिए. वहाँ जब लोगों से मिला, पता लगा कि हाउ दे लुक टुवर्ड्स द बेटर साइड एंड पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्ल्ड. The world has changed after 9/11. A lot of things were coming in and people were realizing it. Took a training, came back. लेकिन वो इक्विपमेंट थोड़ा महंगा था, राइट. जब मैं जाके बात करता था लोगों से तो बोलता नहीं ये तो चलेगा नहीं इंडिया में तो ऐसे ही है, हम तो मैनुअल कर लेंगे, हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज चाहिए. वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता था, राइट. So I'm talking about people talk about IoT right now. I'm talking in at that point of time कि वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर डेटा अपलोड करके डाउनलोड करके लिया जाता था.
और मेरी कंप्यूटर की नॉलेज काम आई, मेरी टेक्निकल माइंडसेट काम आया, तो बहुत कुछ काम आया उस बिजनेस को समझने में। मैं रियलाइज कर गया 3 महीने के अंदर कि इंडिया में नहीं चलेगा। बट उनके पास एक और प्रोडक्ट था जिसके लिए मैं नहीं गया था, बट वो भी मुझे वहां पर उन्होंने बताया था कि ये प्रोडक्ट है। वो था कंडीशनल बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। वो अगर आसान भाषा में बोलूं तो गो नो गो इंडिकेटर्स और रिकॉर्डर्स होते थे। अगर आप कोई, जैसे हम अभी यूज करते हैं ना कि हैंडल विथ केयर या कीप अपराइट, जो कि अगर उसमें कोई इम्पैक्ट लगता था तो वो फ्रॉम क्लियर टू रेड हो जाते थे। मतलब सेंसर्स थे जो बेसिकली इम्पैक्ट को डिटेक्ट कर देते थे। एब्सोल्युटली बहुत बहुत ही एडवांस स्टेज का था वो उस समय। 2002 का बात है, और इंडिया में तो बहुत ही जल्दी था अपने समय से, और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही थी थोड़ी थोड़ी, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट हो रहा था। नहीं, बट आपने क्या सोचा इसके कस्टमर कौन होंगे, मतलब जिनको इतना ज्यादा कंसर्न होगा कि प्रोडक्ट बिल्कुल विदाउट एनी इम्पैक्ट पहुंचे? सो अगर देखें तो मैं उनसे पूछा कि कौन कौन यूज कर रहे हैं, तो दुनिया में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स थे, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, एटीएम मशीन उस समय आने लग गई थी काफी, डिफेंस में बहुत यूज होता था, फार्मास्यूटिकल्स में बहुत यूज होता था, वैक्सीन जब जाती थी तो उनको वैक्सीन को टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, तो बहुत मार्केट थी ग्लोबली जो धीरे धीरे आ रही थी। बट इंडिया में अभी भी वो लोग तैयार नहीं थे, बिकॉज इंडिया में लॉजिस्टिक इतना स्ट्रांग नहीं था, कोरियर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो लोग को जो प्रोडक्ट मिलता था डैमेज मिलता था। So I started this. So from 2002, I still remember the date when I founded my company, SRV Damage Prevention Private Limited, 6th of March 2002. मैं उस सब 3 महीना तो इसी में निकल गया था फोर्किट वाले बिजनेस में। 5वें महीने से जब इसको लेके मैं जाने लगा, उस तरह की कंपनियां जो इंडिया में है, जी मेडिकल सिस्टम्स हो गया, विप्रो हो गया, मेडिकल सिस्टम्स, फिलिप्स था उस समय, एटीएम मशीन, मारुति, और जहां भी जिसके फ्रेजाइल इक्विपमेंट थे, मैं डिफेंस में गया, एयरफोर्स के पास गया, इसरो के पास गया, लेकिन सबने ये कहा कि विकास यू आर फार अहेड ऑफ योर टाइम इन इंडिया, ये अभी नहीं चाहिए इंडिया में, हम अभी हैंडल विद केयर ही लगा लेंगे, लेकिन आपका 200 रुपए का स्टिकर नहीं लगाएंगे, हमें 1 रुपए वाला स्टिकर काफी है। 6 महीने हो गए, 12 महीना हो गया, एक भी सेल नहीं। मैं दिन भर जाके कस्टमर के पास जाता था, मिलता था, प्रेजेंटेशन देता था, और श्रीजा हमारी जो फोकलिफ्ट वाली बिजनेस थी वो संभालती थी, क्योंकि पैसे तो चाहिए चलाने के लिए घर। तो वो बिजनेस चल रहा था, वी वर हैंडलिंग 5-6 लोग थे, जो सप्लाई चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट होने लग गया था बिकॉज मैं इस नए बिजनेस को सेटअप करने में लगा हुआ था। आपने ये डोर्स कैसे खोले? लाइक यू वेंट टू जीई, यू वेंट टू द डिफेंस सर्विसेज, हाउ डिड यू ओपन दीज डोर्स? मतलब पहले ऐसा नहीं हुआ करता था कि आप फोन करो, अपॉइंटमेंट लो और कोई देगा तो जाएगा। पहले क्या होता था, पूरा कोल्ड कॉल होता था, हर चीज कोल्ड कॉल होता था। आप पहुंच जाओ गेट पर और पूछ लो कौन है, और जाके बैठ जाओ, अगर वो फ्री होगा तो आपको मिल लेता था। मतलब जैसे सेल्समैन होता है वो वैसे करता था मैं, कि सर मैं ये प्रोडक्ट है मेरे पास, सर आप देखेंगे। ऐसा मैं कम से कम मैंने आई थिंक मैंने 200 से 250 कंपनियों से मिला होगा जब मैं इस कंपनी को ग्रो कर रहा था। 15 महीना हो गया, फ्रेंड्स बोलने लग गए, विकास डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम एक पैसे का सेल नहीं कियो। बट मैंने कहा नहीं यार, मैं तो कुछ तो करूंगा, बिकॉज बाहर लोग कर रहे हैं, इंडिया में भी ग्रो हो रहा है। 17वें महीने की बात है मुझे कि फ्रॉम 2002 मिड से अब तक श्रीना बोले कि विकास लेट्स बहुत हो गया जिद्दीपना, इसको छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से नहीं, वेरी एक्सपेंसिव और कोई होगा नहीं, कोई काम करेगा नहीं। तो उन्होंने मुझे, श्रीना ने बोला ठीक है 2 महीना का टाइम है तुम्हारे पास, अगर 2 महीना में पहला ऑर्डर नहीं आया तो मैं नहीं करूंगी, आई विल शट डाउन दिस बिजनेस। अब क्या करें, बीवी ने जब धमकी दे दी तो करना तो पड़ेगा ही। 18 महीने में मेरे पास एक छोटा सा ऑर्डर आया अराउंड 1000 रुपए का। मुझे अभी वो याद है, एनसीआर कॉर्पोरेशन है जो कि एटीएम मशीन बनाते हैं पौंडीचेरी में। तो हमारे जो लेबल्स था ना वो बहुत फ्रेजाइल लेबल होते हैं, और इंडिया में द लॉजिस्टिक्स वर नॉट दैट गुड कि वो आपको ले जाए अच्छे से, और वो एक्टिवेटेड होते हैं, तो आपको वो हैंड डिलीवर करना पड़ता। तो 1000 रुपए का ऑर्डर था, और वहां डिलीवरी करना था। मैं प्लेन में ले जा सकता था उसको, लेकिन वो प्लेन का खर्चा वाज 5 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने राजधानी में टिकट कटवाई और 36 घंटे की जर्नी करके चेन्नई गया, चेन्नई से गाड़ी करके पौंडीचेरी गया, उसको डिलीवरी किया, वापस
मैं ट्रेन में वापस आया। तो समझ लीजिए 1,000 रुपए के ऑर्डर के लिए मैंने 5 दिन लगाए। लेकिन वो जो मोमेंट था, आई थिंक अभी तक का मेरे जितने भी, चाहे मैं सक्सेसफुल हो जाऊं या जितना भी मैंने कुछ पा लिया है, वो मोमेंट अभी भी मेरे लिए आज तक का बेस्ट मोमेंट है कि वो 1,000 रुपए का जो ऑर्डर आया था 18 महीने की मेहनत के बाद, मैं वापस आया, मेरे पास फोन आया कि मुझे फिर से चाहिए 1,000 रुपए का सामान, एंड आई वाज द ओनली वन हु वाज ट्रेन्ड टू डिलीवर दैट। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे अक्षय, मैंने फिर से वो जर्नी की और उसको फिर से वो डिलीवर कर दिया। आई थिंक दैट मेड मी स्ट्रांग कि यार कुछ भी हो जाए, अगर अगर आदमी ठान लेना, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। परसिस्टेंस, परसेवरेंस, सब सब वर्ड सामने आ गए कि बस ये झूठ नहीं है, ये सही है। बस उस दिन से आई थिंक मैंने पीछे नहीं देखा। उस दिन के बाद धीरे धीरे अपने आप, जो जितने लोग, आई थिंक पता नहीं क्या हुआ, कुछ कुछ करामत चीज हुई, अचानक हुई, क्या हुआ, जिसके उसके पास मैं गया था सब उनके पास फोन, मेरे पास धीरे 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 करके 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना फोन आने लग गए। यार आप आए थे, वो प्रोडक्ट दिए थे, दिखाए थे, मुझे इसको ट्रायल करना है। Within next 2 years, I had around 40 customers buying small and big products from me. But the first break came in when I was started supplying to defense in various special projects which I don't want to name, and so aerospace and defense became my biggest customers. And after that, we have power transformers, medical equipment, uh, pharmaceuticals, clinical research, electronics. So they all started becoming my customers slowly and slowly, and I started building up my businesses. Forklift businesses भी धीरे धीरे चल रहा था, Reliance Retail आ गया, then we started managing their warehouse. So the life was completely set from 2004 to 2010, 11. 10-11 तक आपका कितना like top line हो रहा था दोनों बिजनेस का मिला के? Like We used to do somewhere close to दोनों business मिला के, if I correctly remember, 2010, I think we used to do around 15 crores of business in terms of top line. कोई मेरे पास डेट नहीं था, 100% ओन बाय। फंड रेज क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, कुछ नहीं। एक धंधा जो होता है ना कि आप धंधा बना रहे हो और जिससे आप घर ले लो। तो मैंने 2010 में अपना घर भी खरीद लिया, गुड़गांव आ गया था एक्चुअली। एक इंसिडेंट हुआ जो कि पूरे इंडिया को चेंज कर दिया। मुझे अभी भी याद है वो रात, 16 दिसंबर 2012, दिल्ली रेप केस, निर्भया। सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी वाज द बिगेस्ट इशू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इंडिया में सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था। by this time you had kids also, 2012-13 में? It's a very personal thing, but I can tell you that when we were struggling during 2002, when I wanted to start my SRB business, जो 18 महीना था, तो हमने decide किया both अपने कि we won't have kids. So that was a very personal decision which we took, and we didn't had kids, and we never wanted to have kids. We wanted to build our life to be with each other. So yes, so I didn't extend my family. So your businesses are like your kids. Absolutely. I think my team are like my kids. I'm 47 now. You can ask my team member. चाहे वो 35 साल का भी कोई बच्चा, मतलब जो टीम मेंबर, उसको मैं उसको बेटा बोलता हूँ कभी कभी, या बच्चा बोलता हूँ। So एक वो उस तरह का फीलिंग है, एक होमली फीलिंग है, and I really made that, and I love that. So coming back to Nirbhaya rape case, within 10 days, I actually, and उस समय क्या e-commerce स्टार्ट हो रहा था बहुत जगह, so Flipkart, Snapdeal, they were doing good. So वो स्टार्टअप वाला पढ़ के अच्छा लगता था, लोग यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो मैं उसमें थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो गया, मतलब e-commerce चलाते हैं, तो पैसे थे उस समय। तो मतलब पैसे का मेरे हिसाब से जितने पैसे होते हैं, not as an investor, something like that. So within 45 days, I created one company. I floated a website, and we went live with a brand called safetycart.com. कार्ट, बिकॉज फ्लिपकार्ट के यूज करता था, तो मैंने भी के यूज किया था कि यार वो भेड़ चाल है, चलो मैं भी कार्ट यूज करता हूँ। Let's start. Exactly. Everyone was using that, and I was not far behind, and I also followed that. So we became India's first safety-related e-commerce website, selling child safety, women safety, travel safety, home safety, all these kind of products. So
And this was like a marketplace, या क्या मतलब मॉडल क्या था इसमें? नहीं, सो मार्केट प्लेस नहीं था बिकॉज जितने भी मेरी नॉलेज थी रिगार्डिंग सेफ्टी, डैमेज प्रिवेंशन और सब, तो मैं सोचा कि मुझे ये पता था कि अगर मैं एज अ कंज्यूमर खरीदूंगा तो मैं मार्केट प्लेस से क्यों खरीदूं सेफ्टी के बारे में. आई वांट टू बाय सेफ्टी प्रोडक्ट्स फ्रॉम समवन हु नोज अबाउट सेफ्टी, हु इज एन अथॉरिटी इन सेफ्टी. सो तब तक मैंने इंडस्ट्रीज में काफी मेरा नाम था B2B साइड में कि मैं प्रिवेंशन प्रोडक्ट्स और ये और वो करता हूँ. सेफ्टी कटर्स का भी था मेरा मतलब. सो बाय दैट टाइम इन माय डिफेंस बिजनेस, जो डैमेज प्रिवेंशन वाली बिजनेस थी, उसके अंदर मेरे पास शायद 10 बाहर की कंपनियों को मैं रिप्रेजेंट करता था इंडिया में. उनका मार्केट करना, उनको मतलब पूरा सेल्स सर्विस एंड मार्केटिंग कंप्लीटली. सो और अच्छे अच्छे कनेक्ट थे बिकॉज वी वर क्लोज टू 25 पार्टनर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. सो ग्लोबल रीच था. इंटरनेट बहुत इजी था उस समय, so everything was good. तो इनिशियली कैसा रिस्पॉन्स रहा? सी इनिशियली तो बहुत ही अच्छा था बिकॉज निर्भया का वेव चल रहा था. जिसको भी सेफ्टी, अरे सेफ्टी तो चाहिए ही चाहिए बिकॉज 3-4 महीने हुए थे. बहुत हुआ, मैं 50 ऑर्डर से 100 से 200 से 500 ऑर्डर पर डे शिप करने लग गया. छोटी सी टीम बनाई. बाकी सब कुछ जो मेरी SRV वाली बिजनेस है, VR फोकलिफ्ट का बिजनेस, वो हैंडल करते थे लोग. फाइनेंस पैसे कभी किसी से रेज नहीं किया, अपने ही पैसे ही लगाता रहा. जो भी कमाता था दूसरे बिजनेस में उसमें लगाता रहा. बट ऑफ कोर्स ई कॉमर्स है, आपको कस्टमर एक्विजिशन, कैग और वो सब चीज तो देखना ही है, SPO को देखना ही पड़ता है. काफी कुछ सीखने को मिला उस समय. तभी आई थिंक मिड की नहीं बात है, ये 2013 टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर. Srijana and I, we were driving from Delhi to Dwarka in Gujarat. So we are always fond of adventure and sports and rough stuff. वो जो भी चीजें तब निकल गए थे अपनी गाड़ी लेके बाय रोड. एंड अहमदाबाद में सृजना को हाई फीवर हो गया था, अराउंड 200 203, and we went up to 104. So we left the car there at a friend's place and we took a flight back to Delhi. And when we went to the doctor, she was diagnosed with urinary tract infection, UTI. ये बहुत कॉमन है, फीमेल्स को हो जाती है, मेल्स को भी होती है. It was so severe that she was hospitalized. While she was in hospital, doctor said it must have happened because of unhygienic washrooms you must have used while on your travel. फिर हम जब बैठे हुए थे, मैं और श्रीना, तो हम सोचे कि हम कहाँ गए, कहाँ खाए, कहाँ वी यूज वॉशरूम. वी स्टेड एट द बेस्ट ऑफ द होटल्स, वी एट एट द बेस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट. पब्लिक टॉयलेट का जो उस समय कंसेप्ट था मेरे को 2013 में, कि वो जो हाईवे पर होता है, ढाबा पर होता है, या सुलभ शौचालय होता है, वो पब्लिक टॉयलेट होता है. वी नेवर रियलाइज दैट any toilet which is being used by more than 2 people is actually a public toilet. That's the idea of Be Safe originated. श्रीजना गेव कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि एक सैनिटाइजर हो और हम उसको स्प्रे करें और वो अपने आप सूख जाए, और लेकिन सब जर्म्स को भी किल कर दे जो यूटीआई कॉज करता है. Internet was there. I started searching globally, but there was no word called toilet seat sanitizer spray. कहीं नहीं मिला मुझे. Be Safe, श्रीना ने नाम दिया, pun intended था, Be Safe. किसी को नहीं पता था कि ये ब्रांड क्या हो जाएगा 7 साल में, बट दैट वाज द टाइम इन द हॉस्पिटल व्हेन वी कॉइन्ड द वर्ड बी सेफ. मैं वापस गया, मेरे फाइनेंस वाले जो हेड है, 2-3 मार्केटिंग वाले, इन लोग से पूछा, यार ये ऐसा कुछ. बोलते हाँ, ये यूटीआई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन पता नहीं लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, और चलो अपने पास तो कंपनी है, सेफ्टी कार्ड है, इसमें अपने बनाते हैं प्रोडक्ट और इसमें बेचते हैं, अपना ई कॉमर्स है, बेचते हैं इसके साथ में. अगेन बिकॉज बीइंग अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, नॉलेज थी कि सामान कैसे बनता है, बिकता कैसे है. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट, किसमें क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, एरोसॉल है, आइसोप्रोपेन अल्कोहल है, वो सब नॉलेज थी. तो एक मैन्युफैक्चर खोजा, उनसे कॉन्टैक्ट किया और उनको कुछ 5000 पीस बनाने का ऑर्डर दिया. बी सेफ. उस समय पहले सफेद और ब्लू रंग की बोतल में मैंने बनाया था पहला. मुझे अभी भी याद है, आई स्टिल लव दैट डिजाइन. और मैंने वो ब्लू इसलिए कॉपी किया क्योंकि फ्लिपकार्ट ब्लू हुआ करता था. तो ब्लू और व्हाइट, पता नहीं मुझे ब्लू से फ्लिपकार्ट ब्लू हुआ करता था. आई थिंक फेसबुक भी ब्लू था उस समय.
और एक और कलर कोऑर्डिनेशन था कि कोई भी सब्जियां ब्लू नहीं होती है, right? That was also this thing was all fruits, vegetables have every color, but they don't have blue color. So that was also my mindset. Let's have a blue color. 5,000 पीस बनाया, मंगवाया. I was surprised. मेरे जितने आसपास में जो दोस्त लोग थे जिनको पता है कि वो श्रीना को यूटीआई हुआ था और ये ऐसे कोई सैनिटाइजर है, इसको स्प्रे करो तो उससे जर्म्स किल हो जाएंगे. मैं 3 दिन में सब बेच दिया. फ्रेंड्स, फैमिली, जिससे मैं उसको मार्केट किया, मतलब कि मैं सबको बोलता था मेरे ये प्रोडक्ट है, ये ले लो, इससे आपको यूटीआई नहीं होगा. 3 से 4 दिन में सब बिक गए. जो नेक्स्ट बनाया उसको डाला अपने वेबसाइट में. थोड़े थोड़े बिकते थे लोग. आई थिंक 2013-14 में योर स्टोरी और उस सब में उनको भेजा. दे वर वेरी सरप्राइज इस तरह का कोई प्रोडक्ट है एंड स्टार्टेड राइटिंग इट. And अभी तक you never thought of funding and No, all? never. मैं वो मेरे था नहीं उस टीम में कि मैं फंडिंग के बारे में कुछ सोचूं, बिकॉज कुछ पैसे अलग किए गए थे, उसी से मैं चला रहा था सेफ्टी कार्ड पे. But आपके बिजनेस में फंडिंग की जरूरत भी नहीं थी अभी तक, मतलब you were like managing to recover your costs. Yeah, it was like marginal losses, like not big No, losses. there was no losses in my. आप कौन से बिजनेस की बात कर रहे हो आप? मेरे सेफ्टी कार्ड तो लॉस पर था, कंप्लीटली लॉस पर चल रहा था, लेकिन मैं फंडिंग के लिए नहीं था. मैं सोचा था कि बन जाएगी थोड़ी सी और उसको स्केल कर लेते हैं बाद में कभी. मतलब आई वाज नॉट दैट सीरियस इन सेफ्टी कार्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. वो तो बिकॉज वो एक वो मोमेंट आया था कि यू हैव टू डू समथिंग ऑन सेफ्टी, बट वो धीरे धीरे बड़ा होता गया. और वो टाइम नहीं मिला कि मैं फंडिंग के बारे में सोचूं. फिर पीसेफ आ गया. पीसेफ को मतलब दिसंबर लास्ट तक तो पीसेफ को बनाने में लग गया. सेफ्टी कार्ड चल रहा था, पैसे लगते जा रहे थे, सेफ्टी कार्ड चलते जा रहा था. सो पीसेफ देखा कि अब मेरे को इतने पॉपुलर हो गया ये इन टर्म्स ऑफ गूगल सर्च कि मेरे पास अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, अमेरिका से लोग बोलने लगे कि ये टॉयलेट सीट सैनिटाइजर चाहिए. पैसे इतने थे नहीं कि इस तरह से बना सके, मतलब जितना था उतना बेचना शुरू किया. बट वो चलता रहा धीरे धीरे. 2014, 15, 16 तब तक हमने दिसंबर 16 तक हमने 1 लाख बॉटल बेच चुके थे. एक्सपोर्ट भी कर चुका था मैं, कर लिया था. लेकिन मेरी जो डिफेंस बिजनेस है उसमें मेरी जरूरत होने लग गई थी क्योंकि वो नेग्लेक्ट हो गया था. ग्रोथ वैसा नहीं था, ग्रोथ था बट वैसा ग्रोथ नहीं थे. फिर भी हमने अभी तक कोई भी लायबिलिटी कुछ नहीं आया था. देन आई थॉट कि यार इसको तो रन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आई नेवर थॉट टू क्रिएटेड अ ब्रांड. मैं सोचा ऐसे ही एक प्रोडक्ट है, सेफ्टी कार्ड के अंदर में बेचता था मैं, मतलब दैट वाज द मेन रीजन. 2016 दिसंबर में I tried hard. I tried very hard to sell this brand. some of the brand बोलता नहीं था ये है, लेबल है, लेबल बोलता था, लेबल है, कोई खरीदना होता. तो 50 लाख रुपया भी कोई ऑफर नहीं कर रहे थे इसको लेने के लिए 2016 दिसंबर में. नहीं, बट आपको क्यों लगा कि इट इज वर्थ मोर देन 50 लाख? दुनिया में 200 million women were suffering from UTI annually. In India, more than 20 million. 1 in 2 women in their lifetime suffer from UTI. 20% of the men in their lifetime suffer from UTI. It's huge data. Which can, if you bring your product and when you know that when sprayed on a toilet seat, and if you're sitting either at home, office, while travel, or in a plane, or in a restaurant, or in a 5-star hotel, you have to sit on that seat when clean is not equal to sanitized. I think I have that vision that this can be a huge brand or huge use case that people will use it today or later, but will definitely. Hygiene was not talked about जैसा आज है, but उस समय 2016 में भी या 2020 जनवरी तक हाइजीन कोई बात नहीं करता. And I started talking about hygiene from 2013-14 onwards. तो मैं रियलाइज किया कि ये हो सकता. तो श्रीजना ने कहा कि वो बेचना है, दिस इज अ प्रोडक्ट मेड आउट ऑफ लव, व्हाई यू वांट टू सेल इट ऑफ, लेट इट बी, चलने दो. तो फिर मैंने उसको परस्यू नहीं किया एंड आई स्टार्टेड लुकिंग कि क्या करना है. तो बाय दिस स्टेज आपने मतलब सेफ्टी कार्ड के लिए फंडिंग, एक्सटर्नल फंडिंग के लिए भी अटेम्प्ट किया, बिकॉज यू फेल्ट दैट it was like eating up a lot of your capital. So did you ever try for external funding? So Akshay, actively though I was not looking for any investors during when I was running safety card, but one of my friend strongly suggested me to go and meet this VC
was at that point of time, even now also, maybe in the top 5, और उसके एक पार्टनर के साथ मिलने के लिए कहा. So मैं 2016 अर्ली में जाके उससे मिला था. Very very interesting story I can tell, and that actually when I put it on one of the media, it was really created as a. So I went and met this VC, and I presented the safety card. Of course, safety card was an e-commerce. E-commerce धीरे-धीरे नीचे आया था. A lot of people were funding on e-commerce, but one vertical amongst many horizontal. I was doing only safety, and we all know safety doesn't sell in India. So he said, "No, because you don't have a good model. Your numbers are not good. I definitely don't want to invest in this company." I said, "But we are not loss making. We're almost about to break even. Of course, it will take time to current up." I was giving all my justification, but he said, "नहीं, because we won't." Look, fair enough. Because I was not looking for. अगर फंडिंग मिल जाती तो अच्छी बात है. पैसा किसको बुरा लगता है? I would have scaled the business to a different level. Because he was young. The guy was young, so I asked him. ये कोई ग्लोबल वीसी फंड था या इंडियन वीसी फंड था? It's a Indian VC fund. It's a Indian VC fund जो initial early stage में invest करता है. So very famous VC fund. Yeah. So मैंने उससे ये पूछा कि यार मुझे एक रीजन तो बता दो कि what are the reasons. Of course एक रीजन है कि बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है या वो अच्छा से स्केल नहीं हो पाएगा, पैसे बहुत चाहिएंगे इसको, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी. And then team, आपके पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं, आप इसको रन कर रहे हो, बट पेडिग्री नहीं है. मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पेडिग्री हियर? बोल रहा है यार, वी लुक फॉर पीपल फ्रॉम IIT and IIM who have hunger, they want to do something in life. By that time he didn't knew that I run other businesses as well. When he told that, I said, "Okay, where you are from?" I asked him, "Are you an IIT and IIM?" He said, "Yeah, I'm from this IIT and this IIM." Okay, I said, fair enough. Then I said, "Do you know this person by name XYZ?" He said, "Yes." But last I remember, he told me the last I remember, he was in US many years ago. I don't know where he is, but how do you know? He asked me. Well, I have a number. Do you want to speak to him? I can make you speak right now. This was like from his B school या ऐसे कुछ था क्या ये connection जिसका? सीनियर था. हाँ, उसका सीनियर था और उसने उसको बहुत हेल्प की थी उसके लाइफ में, wherever he was, उसको बहुत हेल्प की थी. तो मैं बोला कि and he जब उसका नाम बताया ना कि he said, "Yes, I am what because of him. I've learned a lot of things from him and this and that." So I said, "I have his number if you want to talk to him. He's in India now for last many years now." So I dialed that guy and I made him speak to him. थोड़ा बहुत 5-10 मिनट तो बात करते रहे. Then for how do you know Vikas? He's there with me. So बोला, yeah, I work for Vikas. It was like ऐसे that guy. मैंने कहा कुछ हुआ, ठीक है, रख दिया. तो मैंने फोन ले लिया वापस और मैंने बोला, "You know what, Mr. I may not be an IIM or IIT. इंडिया में सिर्फ 1% ही होंगे जो IIT और IIM करके आते हैं. 99% नहीं है, बट वो भी सक्सेसफुल है या वो कोशिश करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, मेहनत करते हैं. लेकिन कभी भी ये किसी को नहीं बोलना चाहिए कि बिकॉज ऑफ पेडिग्री हम आपको इन्वेस्ट नहीं करेंगे. आप कुछ भी बोल सकते हो यार, लेकिन ये मत बोला करो कि बिकॉज ऑफ द पेडिग्री आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी. आपके अगर थीसिस में है वो अलग बात है, बट कोई के सामने मत बोला करो. लेकिन एक चीज मैं और आपको बोलूंगा, मैं बहुत सारे बिजनेसेस किया हूँ शुरू से और सब कुछ सेल्फ मेड है, विदाउट फंडिंग किया हूँ, और मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ कि वो सक्सेसफुल बिजनेस है. ऑफकोर्स वो स्केल नहीं कर सकता, लेकिन कोई के पैसे से नहीं बनाया, अब तक खुद के पैसे से बनाया है. और मेरे पास आज 4 IIT और 6 IIM काम कर रहे हैं मेरे पास, और मैं IIT और IIM नहीं हूँ, और मुझे फक्र है कि मैं उनसे सीखता हूँ. इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, राइट? बट आई थिंक इट डजंट गिव यू राइट टू डिमीन एनीवन हु इज नॉट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन. मैंने उसको ये बोल के वहां से निकल गया था. एंड ये आई बिलीव आपने बाद में लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया. हाँ, कुछ सालों बाद पोस्ट किया था मैंने, 2018 में पोस्ट किया था. और लिंक्डइन में तो मतलब कि आप सोच सकते हो कि लोगों ने तो जो IIT और IIM नहीं है या जो है
वो भी they were like annoyed. The institution is so huge, right? It's so great. They don't teach this kind of stuff, right? वो एक आदमी ने कह दिया तो वो ठीक है. मेरे कोई grudges नहीं है, but I put it there. Okay, do you really need to be an IIT and IIM to raise funding from a VC? That was my post, and it was like you can imagine. I don't want to see the numbers, but yes, it went viral. Yes, I don't have any grudges, but So coming to 2016-17 जब आपको लगा कि you are needed in other businesses and इस business में आपको वो opportunity नहीं दिख रही थी, तो by that time PCF कितना बड़ा था, क्या turnover था उसका, and मतलब safety card overall कितना बड़ा था? सेफ्टी कार्ड कुछ आसपास आई थिंक 2016 we did somewhere around 1 crore of business. मेरा एक फ्रेंड है धीरज जैन, he was the founder of Redcliffe Capital. So he was talking to me a couple of months that time, 2016-2017 में. He thought let's do something together. And I actually purposely avoided to do business with friends. But he somehow convinced me let's move PSAFE out of safety card and let's create a new vertical, a new business, and let me help invest a little bit of money and then let's raise funding, because he believed given my past experiences, I'll able to pull this out through. But I was thinking I was not getting young anymore, right? I was in 17 I was like 44 years old. But with a lot of experiences, a lot of success, failure, learnings, everything. But I took up a challenge. I said, okay, let's try this out. I think this is the last thing before I hang my boots out. I took that challenge and we created a new company. Dheeraj, me, and Srijana, we came on board as a director. I completely came out of all my businesses on a daily operational basis, and I took a plunge full time, 100%, with the same Vikas which was there in 2002 when I started on that journey of 18 months to build PSAFE with a vision to create a world-class personal hygiene company out of India. And Dheeraj was, I think, all the credit goes to him, that he believed and he came together for this journey, which 3 years so far has been a very, very exciting journey so far. So how did it start? Like in the first year, so from 30 lakhs, what did you scale it up to, and when did you decide कि ठीक है, let's diversify into other products, and when did you decide कि funding भी लेते हैं, तो वो जर्नी कैसे हुई? So कुछ पैसे आ गए थे, हमने नई कंपनी बनाई 5 अप्रैल 2017 को, Redcliffe Hygiene Private Limited, with a vision of creating a hygiene company. By that time, not like the COVID situation right now where people are talking hygiene and everyone you meet are selling any of the hygiene products. But I had a vision of creating that at that point of time. Or within 2 months with Dheeraj Connect and the way he presented the company, and April में हमने कंपनी बनाई और जून में हमने $1 million रेज कर लिया फंडिंग with friends and families. His friends, my friends, my families. So we got an opportunity from the production house. Why can't you become the hygiene partner for the movie Toilet Ek Prem Katha? जो 2017 अगस्त में रिलीज हो रही थी, 15 अगस्त के 13 अगस्त के आसपास. India was talking about Swachh Bharat. The movie was made because of the Swachh Bharat, Akshay Kumar's movie. And at one time we got a call from the production house that but we are really interested and we should do this deal. Even if you don't pay us that much of amount, but if you can spend something in collateral and marketing and other stuff, I think let's come on board. So at a very, very, very nominal price, maybe 1/10 of a price they quoted, we came on board as a hygiene partner. Got a video made for the for the promotion, and we had a big posters across cities, social media, and people started noticing that. And I think it happened for the first time in India startup system that a small startup. I'm not talking about a very highly funded startups, but very small startup
has actually collaborated with the Viacom movie, Bollywood, Akshay Kumar, starrer movie. So that was again became a talk of the town, and I think it was the marriage made in heaven. Toilet is same time, toilet is sanitizer. So it was a marriage made in heaven. After this movie, I think a lot of things changed. People started taking us seriously. So, and what are you currently valued at? So at that point of time, when we raised this funding, we raised at around 130 crore valuation. So from 50 lakh to 130 crores in 2 years. In January this year, in summer of 2020, Amazon awarded us as the best SMB brand of India. It was a huge compliment for us, representing When Jeff Bezos had come to exactly India in that front of time. Jeff Bezos. We received an award. He was sitting in the audience, and I went up, and I think it's again was one of the biggest moments for my team. It was completely my team deserved it to get an award where we are representing 6 lakh SMB who sells online on Amazon, and to get the best brand of Amazon, because we have few products which are number one on Amazon when we sell offline as well in their category, where we are fighting that category with the biggies of the world. But the way our consumer loves us, I think the sales which reflects has given this award from Amazon. Okay. So, how do you think business will change after COVID? Like, obviously, hygiene becomes important, and so there will be like a lot of positive impact. But how will it change the way you do business or the mix of channels through which you are currently operating and things like that? It's very early days, but I can tell you that it's a new world out there, right? We are still, when we talking to you, Akshay, we are still in the lockdown. We are waiting tomorrow that how the lockdown 4 opens up, and so there will be a lot of change. But I can tell you, in the near terms, a lot of people will be buying online because there will be restrictions, social distancing in the market, in the malls, the stores. Of course, pharmacies will be open, monitors are open, and they're still working, but there will be a new normal. So I see a lot of shift of buying online, but offline will, on the long term, will come back for sure once we have a solution of a vaccine, because it will be very difficult for people to sit at home and work also. People need to go out, and but it will take at least 12 to 18 months to come to a normal sense. But yes, when you talk about hygiene is in a new avatar altogether. Good to see that eventually hygiene got recognized. People are talking about hygiene now. It's 10 on 10 on a scale of 0 to 10. In January, if I say hygiene was on a scale of 0 to 10 was at number one. There were only few people who were talking about hygiene. Now you meet every second person is selling mask, sanitizer, disinfectant, or anyone, because people have to do some kind of businesses. So the competition has increased, but the big boys will stay there. I saw all the big MNCs, multinational companies who never wanted to go into hygiene are and used to tell me, because this hygiene doesn't sell in India. They themselves have started selling hygiene products. So category has grown. The business has changed. To talk about the hygiene. Otherwise, in the near term, yes, there will be a huge pressure on hygiene as a business, and it will grow only. And talking about that, we at PSAF also experienced an amazing month for the month of March. We only worked for 18 to 20 days, but we had, I'll say, 500% growth in that particular month versus January 2020. And if I can give you a very, very exciting incident, the first positive case was announced on 2nd of March at 2 o'clock, one in Delhi and one in Telangana. And from 2 p.m. to 12 midnight on 3rd of March, we received 40,000 orders online on psafe.com. And we had a capacity of only shipping 1,500 to 1,800 orders a day. 40,000 orders, and fortunately, my team,
during February and early March. During February, we had enough supplies, enough stock in hand. By seeing the condition, what was happening in Italy and in China, so we had our stocks with us. Everyone from the corporate office and the warehouse, my friends, few of my friends, and we hired 200 casual laborers, and we started shipping those orders. From 1,500 orders capacity a day, we went up to 9,000 orders shipping every day. Uh, from 40 people in the warehouse, we were 80 people plus 200 people in the different warehouse to pack and to ship. So from 4th of March, just before Holi, that was 9th of March, we shipped close to 30,000 orders to fulfill, and then on Amazon also we got a huge number of orders. And I can say that that's what startup is all about. That's what experience comes. That was the support comes when everyone, even our in-house chartered accountant, CS, the girls were sitting on the floor in the warehouse and they were packing and they were selling. I think that's the best moment that I can say as an entrepreneur. That when you lead it, your entire team is there to give it. I think that's the best an entrepreneur can create. And I'm so proud of my team that we able to do that. And within the lockdown as well, when the 100% lockdown was announced on 25th of March, the entire team is working from home, right? The warehouse, we started with 2 people, then 4, then 5. But every single day of the lockdown, we are shipping, we are selling, right? Even in March, the full of April, 9, I am in the warehouse every day for a couple of hours. So, Akshay, hygiene was never that important, which is at this moment now, and people have realized that hygiene is gonna stay here. And unfortunately, and I've been saying this from last 8 weeks, unfortunately, COVID-19 has realized people that hygiene is important, and we have been talking about this from 2013. So we are blessed that we had products stocks in hand, and we came out, with all our might and able to help people. We maintained our price. We maintained, our integrity towards our consumers, and I can say that we are very confident that the new normal will be hygiene. And if I can say so, hygiene will be the new security. If you go to any office, go to any restaurant, go to any building, or go to any hotel, 2611 makes security an integral part of any kind of public places. COVID-19 is going to make hygiene an integral part of any public places or for ourselves. So that was Vikas talking about his baby, Be Safe. Vikas is an active angel investor and loves to support women entrepreneurs and D2C startups. If you'd like to get connected to him and pitch your startup, then just mail us. Our email ID is hello@thepodium.in. If you like the Founder Thesis podcast, then do check out our other shows on subjects like marketing, technology, career advice, books, and drama. Visit thepodium.in, that is thepodium.in for a complete list of all our shows. This was an HT Smartcast original. HT Smartcast. Log on to htsmartcast.com to listen to more such podcasts.